Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ अर्जुन। Key domestic stock indices close marginally negative. Sensex ends at 66,283 points. Nifty closes at 19,751 level. Female labor force participation rate rises by 4.2% and Brent crude prices jump 3% trade at $89 per barrel. आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर सूचकांकों में मामूली गिरावट। सेंसेक्स 66,283 और निफ्टी 19,751 के स्तर पर दर्ज हुआ। महिला श्रम बल की भागीदारी में 4.2% की बढ़ोतरी और ब्रेंट क्रूड 3% के उछाल से $89 प्रति बैरल के स्तर पर दर्ज हुआ। वैश्विक बाजारों के नकारात्मक संकेतों से घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली गिरावट रही। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.2% की गिरावट से 126 अंक गिरकर 66,283 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.2% के नुकसान से 43 अंक गिरकर 19,751 पर बंद हुआ। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक मामूली नुकसान से बंद हुए। Key domestic stock indices closed marginally negative amid negative global cues. BSE Sensex reduced by 126 points of 0.19% and finished this week's trade at 66,283. NSE Nifty fell by 43 points of 0.22% and finished the week at 19,751. In the broader market at the BSE, the mid-cap index fell by 0.05% and the small-cap index slipped 0.04%. In the Sensex pack of 30 companies, shares of 16 companies appreciated, while 14 declined. Tata Motors climbed 4.8%, IndusInd Bank gained 2.6%, then HCL Tech rose 2.5%. On the other hand, Axis Bank declined 2.3%, Infosys fell 2.2%, and SBI slipped 1.7%. In sectoral indices at the BSE, 9 sectors logged gains while 11 witnessed losses. The auto sector gained 0.9%, realty and consumer discretionary indices both rose 0.4% each. On the other side, BankX declined 0.8%, IT fell 0.7%, financial services slipped 0.5%. The overall market breadth was negative as shares of 1,189 companies declined, while those of 1,805 companies gained. A total of 156 shares remained unchanged. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 83 रुपये 26 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर रहा। डॉलर इंडेक्स गिरावट से 106.6 के स्तर पर दर्ज हुआ। पुनीत, किस तरह से आंकते हैं शेयर बाजार में? बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। क्या माना जाए वैश्विक जो बाजारों के नकारात्मक संकेत हैं सिर्फ उसका ही असर है, या बाजार अपनी सधी हुई और एक सतर्कतापूर्ण चाल से चलने को मजबूर है फिलहाल के भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए? तो अमित, जैसे आपने कहा कि शेयर बाजार की जो मूवमेंट है वो भारतीय बाजारों में बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि अगर हम ग्लोबल इंडिसेस देखें और ग्लोबल फैक्टर्स देखें तो काफी नेगेटिव प्रेशर्स हैं। यदि अमेरिका के बाजार देखें, वहां पर इन्फ्लेशन का डेटा देखें और जो इंटरेस्ट रेट को लेकर चिंताएं हैं, वो कुल मिलाकर नेगेटिव ग्लोबल फैक्टर्स काफी हैं। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है कि भारतीय बाजार काफी नैरो रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। यदि आप देखें निफ्टी का लेवल तो 19,400 और 19,800 के बीच में काफी समय से ट्रेड कर रहा है। तो मैं कुल मिलाकर कहूंगा कि ये इंडियन मार्केट्स की या इकोनॉमी की रेजिलियंस है कि मार्केट्स अभी इस लेवल पर स्टेबल है। पर्टिकुलरली जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स हैं वहां हमने काफी स्ट्रेंथ देखी है। तो हालांकि ग्लोबल फैक्टर्स नेगेटिव हैं और मुझे लगता है थोड़ा कॉशियस स्टांस रहना चाहिए, पर फॉर्चुनेटली अभी इंडियन मार्केट जो है वो होल्ड अप कर रही है। पुनीत, क्या आंकते हैं, क्योंकि
भौगोलिक परिस्थितियां भी कुछ ऐसी हैं, खासतौर पे अगर हम हाल में ही मिडिल ईस्ट की घटनाओं को पे नज़र रखें, वहाँ पे निरंतर तनाव जारी है और युद्ध चल रहा है। अगर उन स्थितियों को भी मद्देनज़र रखें और साथ ही साथ ये भी देखें कि तकरीबन अक्टूबर में अब दूसरी तिमाही के नतीजे भी आने शुरू हो जाएंगे कंपनी जगत से, क्या बाज़ार को उसने एक सपोर्ट दिया हुआ है, या बाज़ार अभी भी चूंकि हमारी घरेलू मजबूती इतनी अधिक है कि बाज़ार उसको देख के एक मजबूत स्तर पर बना हुआ है? तो हमें देखिए कि जो ग्लोबल फैक्टर्स जैसे आपने मेंशन किया, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, यानी वॉर की स्थिति है यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, चाइना को लेकर चिंताएं हैं, और जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो भी काफी, उसमें भी काफी प्रेशर्स हैं ग्लोबली। उसके बावजूद जो डोमेस्टिक फंड फ्लोज हैं, यानी म्यूचुअल फंड्स में हम इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, वो बहुत स्ट्रांग है और इस वजह से भारतीय बाजार वो ग्लोबल मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो अब इस तिमाही के नतीजे आ रहे हैं और शुरुआत हुई है आईटी के रिजल्ट से, हमने देखा कि टीसीएस और इन्फोसिस और एचसीएल टेक, तीन बड़ी कंपनीज ने अभी तक रिजल्ट्स दिए हैं। हालांकि वो रिजल्ट्स थोड़ी उम्मीद से बेहतर हैं, पर उनकी जो कमेंट्री है, जो उनकी जो उन्होंने गाइडेंस दी है, वो थोड़ी नेगेटिव है। और इस वजह से आप देखेंगे कि आज आईटी सेक्टर के शेयर्स भी गिरे और बैंकिंग शेयर्स में भी हम काफी प्रेशर देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि बैंकिंग क्षेत्र में भी शायद नतीजे उम्मीद से थोड़े नीचे रहेंगे। तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक जो डोमेस्टिक अब अर्निंग्स है वो काफी महत्वपूर्ण है, और कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि कॉशियस रहना चाहिए। देखिए, मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, अच्छा मुनाफा भी आ रहा है इन्वेस्टर्स को। मुझे लगता है भी थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। ये सब फैक्टर्स थोड़ा कॉशियस रहने के लिए एडवाइस दे रहे हैं। आपने बात करी बैंकिंग क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं कुछ चुनौतियां या कुछ दबाव नजर आ रहे हैं। क्या सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों बैंकों को इन दबावों से जूझना होगा? क्यों? और इस तरह जब अर्थव्यवस्था में सरकार ने पूंजीगत व्यय यानी इंफ्रा पे काफ़ी बड़ा खर्च करने का मादा रखा हुआ है, ऐसे दौर में कौन से दबाव ऐसे हैं जो बैंकिंग क्षेत्र पे खासतौर पे नजर आते हैं? देखिए, हमें जब मैं कहता हूं कि बैंकिंग क्षेत्र में दबाव होगा, तो मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई क्राइसिस होने वाला है बैंकिंग क्षेत्र में या कोई बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है। मुझे लगता है कि जो बैंकिंग क्षेत्र में एक क्वेश्चन का एक माहौल है कि प्रोविजनिंग ज्यादा रखें और आने वाले टाइट कंडीशंस के लिए वो तैयारी रखें। मुझे लगता है कि बैंक इस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, और ये दोनों प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए ही लागू होगा। मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को बल्कि ज्यादा थोड़ा परेशानी फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि कारण यह है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं और डिपॉजिट जो है वो कम हो रहे हैं बैंक्स के। तो वहां पर थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है फंड्स के लिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्योंकि काफी डिपॉजिट्स हैं, तो वहां पर प्रेशर शायद कम हो। पर कुल मिलाकर मुझे लगता है बैंकिंग क्षेत्र में हम ग्रोथ में थोड़ा कमी देखेंगे आने वाले समय में। इसलिए जो अभी वैल्यूएशंस हैं वो काफी अच्छी है, तो मुझे लगता है वहां पर स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आई थिंक कि इस क्वार्टर के बाद थोड़ा रुकावट आएगी। घरेलू मोर्चे पे कल एक बड़ी अच्छी खबर थी, जो सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा था, वो बहुत नरमाई उसमें नजर आई थी। ये कितना सकारात्मक असर दे सकता है या कितना सहारा दे सकता है? अभी देखिए, नॉर्मली जब इन्फ्लेशन नीचे आता है तो वो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स जो हैं, चाहे बैंकिंग हो, रियल एस्टेट हो, कंजम्पशन हो, जैसे गाड़ियां हैं, इनके लिए वो अच्छा होता है। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि ऐसी उम्मीद होती है कि अगर इन्फ्लेशन रेट नीचे आ रहा है तो आरबीआई इजी मनी पॉलिसी लाएगा और इंटरेस्ट रेट को कम करेगा। लेकिन गिवन द बैकग्राउंड जो अभी तक हम देख रहे हैं कि हाई इन्फ्लेशन से जूझ रहा है पूरी दुनिया, मुझे लगता है कि आरबीआई अपना गार्ड डाउन नहीं करेगा। हालांकि उनके लिए इजियर है, अच्छी बात है, हेडरूम रहेगा आरबीआई के लिए कि वो चाहे तो इंटरेस्ट रेट कट कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इंटरेस्ट रेट्स कट होने की कोई उम्मीद नहीं है शॉर्ट टर्म में। तो इन्फ्लेशन नीचे आना एक अच्छा लॉन्ग टर्म ट्रेंड जरूर है, पर आरबीआई अभी कोई इंटरेस्ट रेट्स पर एक्शन नहीं करेगा। वो वेट करेंगे ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स नीचे आने के लिए और इन्फ्लेशन को और थोड़ा 4% से भी नीचे आए, तभी वो शायद एक्ट करेंगे। Puneet, the IIP data for the month of August is at 10.3%. We're seeing manufacturing go up by as much as 10% with a strong weightage on IIP. The fundamentals being strong, inflation at 5.02%, even though inflation is expected to go up with pressures coming in because of geopolitical reasons and domestic ones as well. How do you see the stock market reacting to it, the second quarter especially, with
banking, financial services, index companies declaring their results, and at the same time you have the IT index also companies declaring their results. So what is the sentiment like right now? So Arjun, as you can see, it's a very mixed bag. There are many positives for the economy and for the stock markets, and there are some pressures. Most of the pressures are unfortunately global in nature. So whether we talk about geopolitics or global inflation in terms of oil prices, most of these problems are global in nature and not particularly related to India. However, they will affect us. Therefore, I think it will be a great achievement if India maintains its growth rate at close to 7% in GDP, which I hope we can do that. We can do that in the current year, and that will be really an outperformance on the global scene. But again, I would say these stock markets are sitting at very high levels. They're sitting at top of their trading range. And in case there is any unpleasant surprise, whether in terms of corporate results or in terms of inflation or interest rates, I think the markets will take it very hard. So this is not the time when we take very high risk. I think it will be wise to be cautious again, I would say. And because we know the valuations are very high, I have no doubt that Indian economy will continue to grow strongly. I have no doubt that we will do very well in 3 to 5 year time frame. But right now, I think the pressures, or rather the scales, are slightly tilted in favor of higher risk rather than high returns. So you're saying it's a mixed bag, difficult for small investors to enter the market right now. There's also other background apart from the price to earning ratio being quite high, the market being overpriced. VIX right now is 10.62. There's a lack of volatility in the market. It seems to be bulk buying only by FIIs and DIIs. They have been net buyers to the tune of only more than 100 crores. The DIIs were net sellers to the tune of 100 crores, and the FIIs were the net buyers to the tune of 31 crores. They evenly match right now in the market. So how does one look at it in terms of personal investment decisions? So when we talk about large institutional players, you would notice that FIIs, the foreign investors, have been actually selling into Indian markets in the last few weeks. While domestic funds, of course, have been buyers. We had, interestingly, we got data for mutual fund inflows yesterday, and the SIPs continue to be very strong. About 17,000 crore net inflows through SIPs were there in mutual funds. However, there was a net outflow from other equity schemes to the tune of about 4,000 crores. So clearly there is profit booking by domestic investors, but the SIP flows, the systematic investment plan flows, are very strong, and we know provident funds are investing and pension funds are investing. So clearly the fund flows are still very positive. You refer to the VIX, which is very low, which is historically very low right now. Approximately 11 at present. This is largely because of huge trading in F&O segment which is taking place. Large number of players have entered the fray and who trade in options and futures. So this VIX, while I think there's a lot of volatility in this market and uncertainty, yet the VIX, which usually represents this volatility, is not showing that volatility. So I think there's some disconnect there. So I'm not looking at VIX right now to guide me on volatility. We know that the conditions are very challenging, and I would rather be more cautious right now than be sanguine, with low VIX. पुनीत, आपने ये तो कहा कि इस समय इसको आंक पाना कि कितने बाजार में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे अनुमान लगाने की ही बात करूं तो कितने प्रतिशत का एक अनुमानित उतार चढ़ाव आप मानते हैं कि बाजार में आ सकता है वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, चाहे वो घरेलू हों चाहे वैश्विक हों? और ऐसे समय में मेरा दूसरी उत्कंठा ये है कि ऐसे समय में ऐसे कौन से क्षेत्र हैं अभी भी शेयर बाजार में जो आपके हिसाब से सुरक्षित हैं और जिनमें अभी भी आकर्षण बचा हुआ है? तो पहली जो आपका सवाल है ये काफी मुश्किल है, पर मुझे लगता है कि अगर प्रोबेबिलिटी को मैं देखूं तो इस वक्त बाजार में, जैसे मैंने पहले कहा, कि बाजार गिरने की संभावना है बिकॉज ऑफ ग्लोबल फैक्टर्स, और यदि कोई करेक्शन आती है बाजार में तो यूजुअली हम 10% तक मार्केट्स में करेक्शन एंटिसिपेट करते हैं. तो ऐसा हो सकता है, एंड हम जो इसको ट्रेड कर रहे हैं वो अपर एंड ऑफ द रेंज में ट्रेड कर रहे हैं. तो क्लियरली वहां से 5 से 10% की जब भी करेक्शन अगर होगी तो हो सकती है, अगर कोई जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में और हम वर्सनिंग देखते हैं. कुछ जहां पर आपने कहा कि डिफेंसिव सेक्टर्स कौन से हैं जहां पर यू कैन हाइड इन दिस टाइम्स ऑफ वॉलेटिलिटी, तो मुझे लगता है कि एफएमसीजी कंपनीज हैं, ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं,
कुछ सिलेक्टेड PSUs बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, जहां पर अभी भी अर्निंग्स अच्छी हैं और स्टेबिलिटी है। तो मैं कहूंगा कि डिफेंसिव सेक्टर FMCG हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गए, यहाँ पर निवेशक देख सकते हैं कि वो निवेश करें और एंड देन वेट फॉर बेटर टाइम्स। मुझे लगता है कि इस वक्त कैपिटल को प्रिजर्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ग्रोथ को टारगेट नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टर्स को कॉशियस रहना चाहिए। Just one final question. How do you see the markets behaving next week starting Monday? So, Arjun, see, the markets, like I said, are very volatile, and we are getting, in fact, in US this week we are getting very important results from banking sector. We will know what financials are doing in USA, and a lot of economic data is coming, in fact, next week. So, markets will be volatile for sure. I have no doubt about that. Whether they'll go up or go down, I don't know, but I think the probability of going down is much higher than the probability of going higher. नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। देश में इस वर्ष महिला श्रमबल भागीदारी दर 4.2% बढ़कर 37% हो गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 में यह जानकारी दी गई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार सरकार की नीतियों के परिणाम स्वरूप महिला श्रम बल की भागीदारी में बढ़ोतरी हुई है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं का दीर्घकालिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास करना है। पुनीत, बहुत संक्षेप में मैं चाहूँगा कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था में जो श्रमिक बल में अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है तो ये कितना सकारात्मक संकेत है? अमित, देखिए, ये ग्लोबल फैक्टर्स हमारे सामने हैं और ये काफी वेल डॉक्यूमेंटेड है कि जिस इकोनॉमी में ग्रोथ होती है वहां पर विमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर वो बढ़ती है। और उसके बिना, क्योंकि देखिए 50% ऑफ द वर्किंग फोर्स एक तरह से वो विमेन फोर्स है, अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे जीडीपी में तो ग्रोथ कैसे होगी जीडीपी के अंदर? तो ये बात साफ है कि एक लीनियर रिलेशनशिप है विमेन पार्टिसिपेशन और लेबर फोर्स में और जीडीपी ग्रोथ में। और हम ये क्योंकि उम्मीद कर रहे हैं आने वाले समय में कि भारत में 7% से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ होगी, तो मुझे लगता है उसको अचीव करने के लिए हमें विमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाना ही पड़ेगा। और ना सिर्फ एक इकोनॉमिक फैक्टर से, मैं कहूंगा कि सोशल फैक्टर से भी, सोशल कंसिडरेशन में भी, और यदि हमको अपने समाज को आगे बढ़ाना है, रिफॉर्म करना है, तो विमेन को एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। उसमें भी उनकी भागीदारी, उनकी आमदनी बढ़ना वो बहुत जरूरी है। तो क्लियरली मुझे लगता है चारों प्रकार से विमेन पार्टिसिपेशन से फायदा होता है, इकोनॉमी को भी, सोसाइटी को भी। एक बहुत ही अच्छा एक ट्रेंड है ये इंडिया में। In more news, fourth and final meeting of the G20 finance ministers and central bank governors under the Indian presidency is taking place on the 12 to 13 October 2023 at Marrakech, Morocco, on the sidelines of the International Monetary Fund World Bank annual meetings. The communique was unanimously adopted. The communique draws guidance from the G20 New Delhi's leaders' declaration and benefited significantly from the consensus that was reached at the leaders' summit. The fourth ministers and central bank governors meeting also adopted the G20 roadmap on crypto assets. This detailed and action-oriented roadmap will help coordinate global policy as well as develop mitigating strategies and regulations on crypto assets while also taking into consideration the specific implications on emerging markets and developing economies. The communique also welcomed the upcoming Brazilian presidency of the G20 and looking forward to continued work on enhancing global economic cooperation to achieve a strong, sustainable, balanced and inclusive growth. In more news, the Insolvency and Bankruptcy Board of India, IBBI, invites suggestions and comments from the public and regulated entities on the regulations for simplifying, easing and reducing the cost of compliance. The suggestions are invited in pursuance of the announcement made in the Union Budget 2023-24 by the Union Finance Minister. To simplify, ease and reduce cost of compliance, financial sector regulators will be requested to carry out a comprehensive review of existing regulations. For this, they will consider suggestions from public and regulated entities. Time limits to decide the applications under various regulations will also be laid down. The last date for submission of comments and suggestions is 31st of December 2023. Puneet, your brief take on crypto assets, which is a subject matter of discussion at the G20 finance ministers and central bank governors meeting. What's the decision being taken? Because there is a great deal of speculation in this type of an asset class, and more importantly, there has been fraud detected, investigated and prosecutions carried out.
So, Arjun, as you know, crypto is a huge challenge to the international financial order. And we know that crypto assets are misused, they're stolen. In fact, in the recent attacks by Hamas in Israel, it was found that they got money through stolen crypto assets and was used to fund their activities. So clearly there needs to be an international order for regulating crypto assets, and it cannot be done by a single country. It has to be done across the board because this is cross-border currency, right? And you can't control the flow of these assets across the borders. So I think we need to do it on a global scale. I think G20 is the appropriate forum to evolve consensus on such regulation, because the different countries have different regulations on crypto assets right now, which is not working. So and there's a lot of fraud, a lot of I would say theft and cheating and tax evasion and criminal activities in crypto world. It needs to be regulated, and I think it's a good beginning that G20 is taking it very seriously. नजर डालते हैं एशिया यूरोपीय शेयर बाजारों पर। एशियाई बाजारों में आज आमतौर पर गिरावट का दौर रहा। अमेरिका में डॉलर की मजबूती और उपभोक्ता मूल्य में उम्मीद से ज्यादा बढ़ोतरी के कारण आशंका है कि फेडरल रिजर्व लंबे समय तक ऊंची ब्याज दर बनाए रखेगा। हांगकांग का हैंगसेंग 2.4%, सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स और दक्षिण कोरिया का कोस्पी लगभग 1%, जापान का निक्केई 0.6% की गिरावट से बंद हुआ। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक भी 0.5% से अधिक की गिरावट से बंद हुआ। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में लंदन, जर्मनी और फ्रांस के शेयर सूचकांक 0.6% से 1% तक की गिरावट के दायरे में कारोबार करते नजर आए। Puneet, what's your take on the Chinese economy? They are on the deflation trajectory, not inflation. And what is it about manufacturing being moved from China to other China plus countries? What's the state of affairs in China right now with unemployment also going up? So, Arjun, it's a really good question, because not only you and me, I think everybody in the world wants to know what's happening in China. And unfortunately, there is no information coming out of China. In fact, there is greater secrecy around what China is doing or not doing about its economy. And we know that many senior players in China have kind of vanished from the scene. So China is a huge enigma. We don't know what's happening there. But based on whatever data we are getting, it is clear that Chinese economy is slowing down very significantly, driven by huge debt in China. They have a property sector which is completely crashed. In fact, if you look at Chinese now, this is what we are learning now, that last 20 years growth in China, when we talked about 10%, 11% growth, was largely driven by the property sector. And a lot of money and a lot of debt, doubtful money and doubtful debt actually went into that sector, which is unraveling right now. So clearly China has huge problems. And we hope that they stabilize, because for the sake of global economy, China is the second largest economy in the world. We need it to be stable and to grow stably. I don't think anybody gains anything by China's woes. But they need to be more transparent about it. Whatever data we get right now, I think China is it's a huge area of concern for everybody. पुनीत, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा था कि अमेरिकी बाजार से के जो आंकड़े हैं वो आज उतने उत्साहजनक नहीं रहे हैं, खासतौर पर जैसे डॉलर मजबूत हो रहा है, लेकिन वहाँ पे जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसमें उम्मीद से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। ब्याज दरों में निरंतर अभी दबाव बना ही रहना है। इसका अमेरिका में और पूरे वैश्विक बाजारों पे कितना असर पड़ने की संभावना है? देखिए अमित, अभी जो बाजारों की इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स और नहीं बढ़ेंगे और इन्फ्लेशन वहां पर कंट्रोल में आ गया है। मेरा आंकलन थोड़ा फर्क है। मुझे लगता है कि अभी अमेरिका में इन्फ्लेशन पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है और वो थ्रेट बना हुआ है, और ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए वो थ्रेट बरकरार है। और इसी वजह से मैं ये कह रहा था शुरुआती दौर में कि कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि यदि यहाँ से और इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी करनी पड़ी अमेरिका में और दूसरी इकोनॉमीज में, तो इकोनॉमी को काफी प्रॉब्लम हो सकती है। और रिसेशन जिसे हम अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो शायद रिसेशन नेक्स्ट ईयर वो हमारे सामने हो। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अमेरिका में जो अभी आंकड़े आ रहे हैं वो कंफर्टेबल नहीं है। इन्फ्लेशन को लेकर के आंकड़े कंफर्टेबल नहीं है। इंटरेस्ट रेट्स ऑलरेडी बहुत हाई है वहां पर। 10 ईयर जो बॉन्ड यील्ड है वो काफी 4.7 4.8 हो गई है। मॉर्गेज रेट्स, यदि आप अपना होम लोन लेने जाते हैं तो 8% से ज्यादा होम लोन रेट है अमेरिका में। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर कितनी प्रॉपर्टी सेक्टर में क्राइसिस आ सकता है। तो मुझे लगता है अमेरिका इज नॉट आउट ऑफ द वुड्स राइट नाउ, और वी नीड टू वॉच अ लिटिल बिट मोर to see where it goes.
Well, let's have a look at the US markets now. The major stock indices ended a 4-day winning streak, pressured by rising treasury yields as traders fretted over new data showing persistent US inflation. The Dow Jones Industrial Average was lower by 0.5%. The S&P 500 and the Nasdaq Composite Index both lost 0.6% each. It seems the money market is once again proving to be highly profitable for those who are looking for short-term gains. But more importantly, apart from the money market interest in the US economy, we are seeing the dollar index climb again. It's about 107. How concerned should the global economy be, especially looking at the exchange rate with emerging market countries and the developed countries as well? So, Arjun, clearly, if the dollar index trends higher, it is a huge concern for emerging economies particularly, because fund flows are affected. If dollar index goes higher, then the foreign investments, whether in the stock markets or FDI, all gets affected. And also it destabilizes the international financial stability. So clearly, I don't think we want higher dollar from these levels, but that will depend a lot on the rate of interest in America. If US Fed is forced to raise rates once or twice in the coming months, then I think yields will really skyrocket, and that would be a big concern. So I'm worried about it. I'm not comfortable with the kind of economic data we're getting out of USA right now. While the markets seem to be quite comfortable with it, but I think we need to be cautious. The VIX is under 17. Is that comfortable? Are we seeing retail participation? So in America, VIX has been ruling between 15 and 20, and it stays there. So American markets are, as yet, they're not flashing any warning signals. Anything above 20 becomes a matter of concern for US economy, for US markets. So we are still at 17, which is okay. But I think it could go higher if the markets become volatile. Moving on to the oil market, oil prices today jumped 3% amid the US tightened its sanctions program against Russian crude exports, raising supply concerns in an already tight market. And global inventories are forecast to decline through the fourth quarter. In intraday trade, Brent crude was trading at $89 per barrel. West Texas intermediate crude price was at $85.90 per barrel when reports last came in. Puneet, we're discussing about the US dollar index and its impact on US dollar-denominated commodities. For instance, oil. How is that going to be impacted in light of what's happening in West Asia and the sanctions on Russia again? So I was about to point this out, that in fact, if you look at the geopolitical situation, I think over the weekend, we could see increased action in the Middle East. Israel is warning that they might launch a ground attack in Gaza Strip. So I think the political situation is still very fluid. And in anything like that happens, I think oil prices will really go up, because the Middle East, the war could spread in the Middle East. Over the weekend, I think it's going to be very touch and go. So clearly, I think we're in a zone where anything could happen, and we should again, I think, watch it very carefully. नखड़ा लेते हैं सराफा बाजार पर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर के वायदा कारोबार में सोना 540 रुपए की बढ़त से 58,460 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा। चांदी भी 890 रुपए के उछाल से 69,960 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। वैश्विक बाजार में सोना बढ़त से $1,906.20 प्रति औंस और चांदी बढ़त से $22.37 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई। पुनीत, बहुत संक्षेप में, क्योंकि भारत में सोने और चांदी के प्रति जो लगाव है वो हमेशा से बना रहा है और अभी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उससे सोने और चांदी की कीमतों में सीधा कितना असर पड़ता हुआ नजर आता है? देखिए, थोड़े दिन पहले गोल्ड की कीमतें थोड़ी नीचे आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये नीचे स्टेबलाइज करेंगी, लेकिन अब जो सिचुएशन चल रही है मिडिल ईस्ट में पर्टिकुलरली, मुझे लगता है कि गोल्ड में और तेजी आ सकती है, क्योंकि वो सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ये अभी यहाँ पर और तेजी का स्कोप है शायद गोल्ड में। वैश्विक बाजारों में $2,000 से नीचे है अभी भी सोना। कितना स्कोप और भी नजर आता है, क्योंकि भारत में त्योहारी सीजन भी शुरू होने वाला है? देखिए, अगर मिडिल ईस्ट की वॉर में कोई और ज्यादा सिचुएशन खराब होती है तो मुझे लगता है ये 2000 के आंकड़े को क्रॉस कर जाएगा गोल्ड। जी पुनीत, कार्यक्रम में शामिल होने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद। अमित। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर।
घरेलू शेयर सूचकांकों में मामूली गिरावट, सेंसेक्स 66,283 और निफ्टी 19,751 के स्तर पर दर्ज हुआ। महिला श्रम बल की भागीदारी में 4.2% की बढ़ोतरी और ब्रेंट क्रूड 3% के उछाल से $89 प्रति बैरल के स्तर पर दर्ज हुआ। Key domestic stock indices closed marginally negative. Sensex ends at 66,283 points. Nifty closes at 19,751 level. Female labor force participation rate rises by 4.2% and Brent crude oil prices jump 3% trade at $89 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.